Avar Abhinandan and warm greeting from HRDC Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I am Sanjeev Sharma. I am Assistant Director at UGC HRDC JNU, and it is my privilege and honor to host this the combined inaugural session for 3 courses. The first one is the first faculty induction program, which is basically for the newly recruited faculty and those who have just joined the university or the college. So this course is generally for the faculty member before their confirmation. And the main purpose of this course is to make a teacher aware about the administrative setup and sensitize him or her about the classroom reality and understand the bond between the stakeholder to realize the professionalism and aspiration and developing as agent of the socio-economic change and national development. The second course we have today is the second refresher course in the philosophy and the third refresher course in e-learning and e-governance. So basically these refresher course for the faculty member to enhance, to update the existing knowledge so that they can share with the faculty colleagues and the student. विद्या की देवी मां शारदा को सजदा एवं नमन करते हुए and with the kind permissions of our esteemed guest and director, now I would commence the inaugural session. I am very happy and it's indeed a great privilege and honor today that we have two esteemed and the eminent guests we have with us, Professor Anil Daitra Sahasrabudhe, Chairman, All India Council for Technical Education, New Delhi. We have with us Professor Ramesh Chandra Sinha, sir. Sir, we are very happy and thank you very much for accepting our invitation with us. I would like to reiterate here that, sir, this is our 7th, 8th, and 9th the course, and we have already completed 6 HRDC courses. Out of these 6 courses, 4 short-term courses and 2 refresher course. Sir, we have with us our Director HRDC, Professor Brajesh Kumar Pandey, sir, and the 6th coordinator. We will introduce. I will introduce the later, and all the participants with us. So now it's my honor to introduce our esteemed guest. Although they need not require any introduction, they are like nationally and internationally a very renowned personality working in the field of the academics, administrations, and they are the great visionaries. So first of all, I welcome Professor Ramesh Chandra Sinha. He is presently the chairman of Indian Council of Philosophical Research, Ministry of Education, New Delhi. Welcome, sir. Professor Sinha was earlier the professor and the head of the Department of Philosophy, Patna University. Sir is also earlier the senior fellowship from the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, and he's also the fellow of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla. Sir has done a very remarkable work in the field of the philosophy and has written more than 100 of publications in the form of the research journals or the books. We welcome you, sir, and we believe that all the participants, all of us will be highly benefited by your presence, sir. We are very fortunate with us that we have a great visionary, Professor Anil Sahasrabudhe, sir. He is presently chairman of All India Council for Technical Education, New Delhi, and he is a professor of mechanical engineer at Indian Institute of Technology, Guwahati. Sir, actually, I saw a long CV, but I will try to highlight only the few lines here. The Professor Anil D. Sahasrabudhe has held several important academic, research, and administrative positions at Indian Institute of Science, Bangalore, Tata Consulting Engineer, Northeastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar,
and IIT Guwahati. He is a chairman for Basic Scientific Research Empowered Committee of UGC and SIAM, and he is fellow of IET Institute of Engineers. Thank you very much, sir, and thank you for your presence. And we are very, very lucky that we are here for your blessing, sir. We have with us our director HRDC JNU, Professor Brajesh Kumar Pandey. He is a professor in School of Sanskrit and Indic Study, and before joining JNU, he was professor at Kamayu University, Nainital. Thank you very much, sir. We have with us our coordinator, and I would first introduce the coordinator of the faculty induction program, Professor Har. He is a dean for the School of Biotechnology. Dr. Bandana Mishra, in the faculty in the School of International Studies and the associate dean at IHA. We have with us the Dean of School of Sanskritic and Indic Study, Professor Santosh Kumar Shukla, Coordinator for the Refresher Course Philosophy, and Professor Oinam Bhagat, Chairman for the Northeastern Study. Welcome you, sir. And we have with us the Coordinator for the e-learning and the e-governance course, Professor Ravi Case. He is the Professor for the Center for E-Learning, and Dr. Sheetal Sharma from the Center of European Study. I would also like to highlight here, sir, that during this coronavirus pandemic, it has entirely changed the education environment around the globe. The situation is no different in India, and now many education institutes are opting to continue their normal classes in online platform and conducting online conference, seminar, and training program. This includes the use of the online tool that allow teachers and students to meet virtually. And with the continuous support of our Vice Chancellor, Professor M. Jagdish Kumar, basically he is like the behind all our inspiration and the encouragement. He encourages all of us to conduct all these courses through online. And as per the direction of the University Grant Commission, we are conducting all refresher course, faculty induction program, short-term program through online for this academic year. And in addition to these courses, we are also conducting a webinar series continuously with this course. Now, I would try to highlight कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी की आपके समक्ष साझा करना चाहूंगा। है कौन बिगन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम फोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। I just want to say here that whatever the enthusiasm we all have, whatever the inspiration by the our seniors, so we are trying to do our best that we will provide you all the best resource person. So that's why UGC HRDC has not changed any format. Whatever we are conducting the course through offline, we are conducting the same mode, the online. Only the mode is only the virtual the mode. So I welcome you all. और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं HRDC JNU के निदेशक महोदय प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी से विनम्रता करूंगा कि हमारे गणमान्य अतिथियों तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अपने विचार आपके समक्ष रखें। ओवर टू यू प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर। स्वागत सबका। आज हमारे 3 पाठ्यक्रम एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। इस संयुक्त उद्घाटन सत्र में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अर्थात आभासी माध्यम से जुड़ने के लिए JNU परिवार की ओर से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सत्र में हमारे मध्य 2 सुविख्यात शिक्षाविद और धुरीण विद्वान उपस्थित हैं। दोनों ज्ञान से और स्वरूप से दार्शनिक हैं। मैं सबसे पहले भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमें सबको विश्वास है कि आपके दिशा निर्देशन में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद अपनी शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों की सीमाओं का न केवल विस्तार करेगा बल्कि दर्शन एवं चिंतन परंपरा की भारतीय विश्व मान्यता को और भी सुदृढ़ करेगा।
आज का आपका संबोधन संयुक्त सत्र के प्रतिभागियों के दार्शनिक ज्ञान क्षितिज को निश्चय ही संस्पर्श करेगा। प्रत्येक विषय का, आप सभी जानते हैं, प्रत्येक विषय का अपना दर्शन होता है और वही उसकी दिशा और सीमा दोनों का निर्धारण और नियमन करता है। मुझे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे जी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आपका तकनीक एवं विविध क्षेत्रों का सुविस्तृत ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव एवं गहन शोध अभिरुचि हम सबके लिए हमेशा कुछ नए संदर्भों की ओर उन्मुख करती है। आप हमारे JNU के पड़ोसी भी हैं, तो आपका पड़ोस में ही स्वागत है सर। मैं स्वागत करता हूं अपने तीनों पाठ्यक्रमों के जो सुविज्ञ समन्वयक हैं। दर्शन में रिफ्रेशर कोर्स के समन्वयक प्रोफेसर भगत ओयनम एवं प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल, ई लर्निंग एवं ई गवर्नेंस के समन्वयक प्रोफेसर रविकेश एवं डॉक्टर शीतल शर्मा, तथा फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के समन्वयक प्रोफेसर पवन कुमार धर एवं डॉक्टर वंदना मिश्रा। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ हैं और कुशल समन्वयन के धनी हैं। बड़े मनोयोग से और बड़े परिश्रम से आपने पाठ्यक्रमों के विशेषज्ञों का पैनल बनाया है और हमें विश्वास है कि आप सबको एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा। मैं अपने ऊर्जावान सहायक निदेशक जिनको अभी आप सुन रहे थे, डॉक्टर संजीव शर्मा, उनका भी स्वागत करता हूं। आजकल जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज संचालित हो रहे हैं उनका संयोजन बड़ी कुशलता से आप कर रहे हैं। हमारे सेक्शन ऑफिसर ओम प्रकाश जी, तकनीकी सहायक जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, गौरव जी और नेहा जी, तथा जो हमारा पूरा स्टाफ है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। इन सबके सम्मिलित सहयोग से ही आज तक हमने, जैसा कि बताया पहले, कि 6 विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर चुके हैं इस वर्चुअल मोड में, और इसमें हमें एक गरिमापूर्ण सफलता भी मिली है। आप सभी जानते हैं कि जो ये इस समय कोरोना जनित वैश्विक आपदा है, इस घड़ी में सारी सीमाओं और कठिनाइयों के बाद भी हमने पाठ्यक्रमों के संचालन में JNU की शैक्षणिक गरिमा, मर्यादा, अनुशासन एवं मापदंडों को बनाए रखा है। सभी प्राध्यापक पार्टिसिपेंट्स UGC द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का तत्परता से अनुपालन करेंगे और हम और आप इसी पारस्परिक समन्वयन द्वारा इन कोर्सेज को सफलतापूर्वक संचालित कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारा जो पहला कोर्स है ई लर्निंग एवं ई गवर्नेंस का, जिसमें रिफ्रेशर कोर्स आज से संचालित होगा, उसकी उपयोगिता से आप सभी परिचित हैं। जो नहीं भी परिचित थे उन्हें कोविड-19 ने पूर्णतः अवगत करा दिया है। तकनीक का प्रयोग शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक एवं एक तरह से अनिवार्य उपकरण बनता जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल डिलीवरी माध्यम को बदलना ही नहीं है, बल्कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझना एवं उनकी जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न हैं उनको निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करना है। मल्टी मोड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसको भी समृद्ध करने वाला है। सारे अध्यापकों के लिए ई गवर्नेंस की आवश्यकता भी एक तरह से अनिवार्य बनती जा रही है। फिजिकल मोड से हमें ई ऑफिस अर्थात वर्चुअल मोड पर पूरी तरह आना ही पड़ेगा और हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा ये पाठ्यक्रम जो प्रतिभागी हैं उनको ई गवर्नेंस की बारीकियों से अवगत करा सके। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में हमें बहुत सारे 600 के लगभग आवेदन आए थे, किंतु उसमें से हमें 40 का ही चयन करना था, इसलिए बहुतों को निराश होना पड़ा है। और जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनसे इसलिए अपेक्षाएं भी बहुत रहेंगी। FIB का उद्देश्य उच्च शिक्षा में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको संपूर्ण संस्थागत अर्थात इंस्टीट्यूशनल कार्य पद्धति से न केवल अवगत कराना है, अपितु उनके शोध एवं शिक्षण अभिरुचि का विकास करना, उसे सकारात्मक दिशा में उन्मुख करना, उनमें छात्रों एवं समाज के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना, उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करना तथा रूल्स, रेगुलेशंस और गवर्नेंस की जानकारी देना भी है। हमारे जो सक्षम
समन्वयक हैं, उन्होंने इस दृष्टि से एक सर्वांगपूर्ण पाठ्यक्रम का संयोजन किया है जो मुझे लगता है कि निर्धारित सभी आयामों का स्पर्श करेगा। दूसरा हमारा जो पाठ्यक्रम है वह दर्शन शास्त्र में रिफ्रेशर अर्थात पुनश्च यह हमारा दूसरा कोर्स है जो हम संचालित कर रहे हैं। ये पहला है जिसे हम ऑनलाइन मोड में संचालित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं भारत में दर्शन शास्त्र की एक समृद्ध परंपरा है जिसने जीवन और शिक्षण के प्रत्येक क्षेत्र को अनुप्राणित किया है। भारतीय दार्शनिक परंपरा ने दर्शन को बौद्धिक विमर्श की जड़ता से आगे ले जाकर उसे स्वानुभूति अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है। इसलिए औपचारिक रूप से आप सभी जानते हैं कि अशिक्षित होते हुए भी रमण महर्षि और परमहंस रामकृष्ण महान दार्शनिकों की श्रेणी में हैं। वे महर्षि एवं परमहंस अपनी वह उसी अंतः अनुभूति के बल पर बने हैं क्योंकि वे समझते हैं कि जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व दार्शनिक सम्मेलन में कहा था, विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था कि नृणामे को गम्यस्तुमसि पयसा मरणवैव, अर्थात हमारी परंपरा, ज्ञान परंपरा, चिंतन परंपरा ये मानती है कि सभी पंथ जो हैं उसी परम सत्य की ओर जाने के मार्ग हैं। वेदों से निश्चित षड्दर्शनों सहित जैन बौद्ध चारवाक में पुष्पित पल्लवित होती हुई यह परंपरा आधुनिक समय में अजस्र धारा की तरह प्रवाहित होती हुई आई है। यह सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर के चलती है और हमारा मानना है कि एक तरह से जो दर्शन का लक्ष्य है वह कला के लक्ष्य की तरह जो सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति और जिसका लक्ष्य शिवत्व प्राप्ति है वह है। वैश्विक परिदृश्य में भारत का बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं अनुभवात्मक विमर्श किस प्रकार परिवर्तन का संवाहक बन सकता है, यह हमारी दृष्टि के प्रयत्न, प्रसार एवं क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। जेएनयू की ओर से मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि वे सभी मिल करके इन सभी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। पुनः आप सबका अभिनंदन, सबको प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ऊर्जावान व्याख्यान के लिए, और हम सभी आभारी हैं आपके सहयोग के लिए और आपके दिशा निर्देशों के कारण ही हम ये सब आपके जो कार्यक्रम हैं करवा पाते हैं। Now it is my privilege, indeed an honor, and my sense of gratitude to invite Professor Ramesh Chandra Sinha to deliver inaugural address. Sir, we are very eager and waiting to hear you, sir. Over to you, Professor Sinha, sir. सबसे पहले मैं आप सभी को अपना नमस्कार निवेदित करना चाहूँगा और जेएनयू के वाइस चांसलर और डायरेक्टर मान्यवर डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर शास्त्र बुद्धे जी, प्रोफेसर ओएनएम भगत, डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल और इस रिफ्रेशर कोर्स को संचालित करते हुए डॉक्टर संजीव शर्मा जी। अभी बहुत ही प्रांजल हिंदी में पांडे जी का अभिभाषण बहुत ही संक्षिप्त था लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। आपने एक आश्चर्य मुझे होता है कि ई लर्निंग, ई गवर्नेंस एंड फिलोसॉफी, ये आपने रिफ्रेशर कोर्स के लिए इस तरह के विषय का चुनाव किया। ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इस कोरोना काल में, इस पीरियड में बहुत सारे
बहुत सारे वेबिनार्स करीब करीब प्रतिदिन कोई ना कोई वेबिनार हम लोग करते रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर। और मुझे अति प्रसन्नता है कि आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और विशेषकर मैं दर्शन शास्त्र विभाग के वो डॉक्टर ओएनएम भगत से पहले मिल चुका हूँ। विषय वस्तु पर आना चाहूँगा क्योंकि समय की मर्यादा है, समय की सीमा है, और इनॉग्रल एड्रेस में कोई विशेष बात तो नहीं करनी होती है और मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन ये अवश्य कि भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र बहुत ही एक तरह से क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी पूरे विश्व में इसकी मर्यादा है, इसकी गरिमा है। हाँ, एक प्रश्न से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था और वहाँ एक संस्कृत के स्कॉलर, क्योंकि आपके पांडे जी भी संस्कृत के हैं और लोग भी, और मैं जेएनयू में जाता रहा संस्कृत विभाग में, और फिलॉसफी में हमारे मित्र डॉक्टर आरपी सिंह और अभी जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर बिंदुपुरी, ओएनएम भगत जी, तो मैं बहुत दिन से आता जाता रहा हूँ। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर ने एक प्रश्न पूछा कि क्या भारतवर्ष में वेदांत दर्शन के बाद भारतीय दर्शन मर चुका है? Is Indian philosophy dead after? His question was, is Indian philosophy dead after Shankaracharya? Then I understood that he means कि क्या वेदांत के बाद भारतीय दर्शन मृत प्राय हो चुका है? ये प्रश्न अस्वाभाविक प्रश्न था। स्वाभाविक इसलिए कि क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी की इतनी ग्लोरी थी, इतनी मर्यादा विश्व में रही है, और विशेषकर वेद उपनिषद की इतनी मर्यादा रही है। और उस काल में आश्चर्यजनक बात तो ये थी कि भारतवर्ष में दार्शनिक के रूप में महिलाएं, विमेन फिलॉसफर, विशेषकर इस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह से रिफ्रेशर कोर्स में तो जो पढ़ी हुई बातें हैं उन बातों को हम रिफ्रेश करते हैं, कुछ नई बातें भी करते हैं। तो भारतवर्ष में जो क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी है, वेद उपनिषद काल में यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन के प्रतिपादक कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एक पुस्तक है सम्राट चंद्रगुप्त। उस पुस्तक में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि भारतवर्ष में जो दर्शन पल्लवित और पुष्पित हुआ है, तो उसको ऋषियों ने प्रतिपादित किया। कोई यूनिवर्सिटी टीचर ने कोई फिलॉसफी का प्रतिपादन किया हो, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा कि ये ऋषियों की देन है, और विशेषकर हमारे क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी। तो क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी, अब यहाँ मैं बात कर रहा था कि किस तरह से, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में बहुत ही अच्छे उद्भट
विद्वान, सभी लोग नाम जानते हैं, और खास करके जेएनयू के लोग तो बहुत सारे जानकार हैं। तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के गुरु ने कहा कि आप मंडन मिश्र से वाद विवाद करके आप उनको परास्त करके फिर आप जगत गुरु शंकराचार्य बन जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब मंडन मिश्र के पास शंकराचार्य पहुंचे, अब देखिए भारतीय क्लासिकल इंडियन फिलोसफी की विशेषता, तो महेशी एक गांव है बिहार में, मुजफ्फरपुर के पास। तो वहां जब पहुंचते हैं तो कुएं से पानी निकालने, पनिहारन से पूछा उन्होंने कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। तो पानी भरने वाली पनिहारन ने बताया, संस्कृत में बात की और बताया कि जिस दरवाजे पर तोता संस्कृत बोलता हो, उसी दरवाजे के पास आप खड़े होकर मंडन मिश्र को से मिल सकते हैं। तो ये अब मंडन मिश्र से जब वो शंकराचार्य मिले तो उनसे शास्त्रार्थ में उन्होंने, संक्षेप में हम बताना चाहेंगे, शास्त्रार्थ में उन्होंने परास्त कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी भारती ने कहा कि आपने किसी का अस्तित्व, और खास करके भारतवर्ष में पति पत्नी दोनों का अस्तित्व पूर्ण होता है। आपने मंडन मिश्र जी को परास्त किया, लेकिन मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं शास्त्रार्थ। तो ये देखिए भारतवर्ष के विद्वता क्या, और विशेषकर प्राचीन परंपरा में स्त्रियों का जो दार्शनिक एक दृष्टि थी, तो भारती ने शंकराचार्य से जो डायलॉग था, जो आर्गुमेंट था, वो उन्होंने किया, और शंकराचार्य को एट फर्स्ट लेग ही वाज डिफीटेड, क्योंकि उन्होंने साइंस ऑफ सेक्स, अब मैं परिष्कृत रूप से बोलना चाहूंगा कि उस पर प्रश्न जब उन्होंने किया, तो शंकराचार्य चूंकि अनमैरिड थे, बैचलर थे, उनको वो जीवन के उस एस्पेक्ट को, जीवन का अस्तित्व के बारे में उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। तब वो वहां पर उनको भारती से हारते हुए, परास्त होकर, फिर उन्होंने डायलॉग स्टार्ट करने की बात की बाद में। फिर बाद में शंकराचार्य जब जीवन का अनुभव लेकर, वो एक लंबी कहानी है, आते हैं, तब उन्होंने मंडन मिश्र दंपति को परास्त करके जगत गुरु शंकराचार्य बने। तो ये क्लासिकल इंडियन फिलोसफी में गार्गी, मैत्री, आप देखते हैं कि किस तरह से आज के समकालीन भारतीय चिंतन में महिला दार्शनिकों को हम बहुत कम पाते हैं, लेकिन जो हमारा क्लासिकल इंडियन फिलोसफी था, उसमें याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी ने डायलॉग किया। तो ये भारतवर्ष के विशेषता थी। तो मैं कह रहा था कि किस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत के विद्वान ने कहा कि इज इंडियन फिलोसफी डेड आफ्टर शंकराचार्य। मैंने उनको बताया कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतवर्ष में जो दर्शन की मान्यता रही है, वो हु इज ए फिलोसोफर इन इंडिया, द फिलोसोफर इज वन who builds a system। इसीलिए आप देखते हैं कि भारतीय दर्शन की जब भी बात करते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स एंड द हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स, भारतीय दर्शन को एक तरह से क्लासिफाई किया गया कि हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स, या हम कह सकते हैं नॉन वैदिक सिस्टम, और ऑर्थोडॉक्स, लेकिन उसको हम लोग
Vedic system of philosophy, and philosopher is one who builds a system. ये परिभाषा हमारे यहाँ प्रचलित रही है, लेकिन आज उस प्रश्न के बाद हमने सोचा और सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि philosophy and philosophizing, they are two different things. Philosophizing is a process and philosophy is a system. और इसलिए ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, वैदिक और नॉन वैदिक जो दर्शन शास्त्र का वो जो कैटेगरी हुआ है अपने भारतवर्ष में, लेकिन कंटेम्पररी इंडियन थॉट को जब हम लेते हैं तो उस तरह का सिस्टम बिल्डिंग नहीं है। श्री अरविंद एक दार्शनिक हैं। केसी भट्टाचार्य, जो लोग दर्शन के शिक्षक हैं, वो जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रोफेसर कृष्णचंद्र भट्टाचार्य एक बहुत ही मौलिक चिंतक रहे, मौलिक दार्शनिक रहे। उन्होंने वेदांत, दोनों श्री अरविंद और केसी भट्टाचार्य दोनों समकालीन भारतीय चिंतक, अब ये वेदांतिक दर्शन को ही आधार मानकर अपने दर्शन को प्रतिपादित किया है। शायद यही कारण रहा हो कि कोई नया सिस्टम भारतवर्ष में नहीं आया है, इसलिए उनका प्रश्न चुभता हुआ प्रश्न था। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम दर्शन की परिभाषा को समझें, और ये प्रश्न उठा था भारतीय दर्शन में जो परिभाषाएं दी गई हैं उस परिभाषा के आलोक में, तो हमें अपने दर्शन की परिभाषा को बदलने की आवश्यकता है। A philosopher is one who can relate one concept to the other. It is this requires a redefining philosopher. Philosopher is one who relates one concept to the other. और ये कोई जरूरी नहीं है कि फिलोसफर हमेशा कोई सिस्टम बिल्डर हो, कोई एक स्कूल देता हो, बल्कि वैसे भी लोग दार्शनिक कहलाने के लिए उपयुक्त हैं जो एक अवधारणा को दूसरी अवधारणा के साथ जोड़ते हैं। यद्यपि कि श्री अरविंद और केसी भट्टाचार्य वेदांतिक दर्शन के आलोक में ही अपने दर्शन को प्रतिपादित किया है, लेकिन उनका दर्शन बहुत ही मौलिक रहा है। केसी भट्टाचार्य ने फिलॉसफी को परिभाषित किया कि फिलॉसफी इज एक्सप्रेशन ऑफ द थियोरेटिक कॉन्शसनेस। ये थियोरेटिक कॉन्शसनेस, ये उनकी परिभाषा थी कि फिलॉसफी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ थियोरेटिक कॉन्शसनेस। लेकिन मात्र अवधारणाओं का चिंतन या अवधारणाओं की अभिव्यक्ति दर्शन शास्त्र की क्रिया नहीं है। भारतवर्ष में बहुत सारे दार्शनिक हुए, समकालीन दार्शनिक, जिन्होंने जिंदगी को, जीवन को व्यवहारिक रूप से जीने का प्रयास किया, और उसमें विवेकानंद को लें। विवेकानंद ने दर्शन को जीवन के साथ जोड़ कर देखा, और इसलिए फिलॉसफी की परिभाषा थोड़ी बदलनी होगी। Philosophy is not only a theoretic consciousness, but it has got its therapeutic use too. व्यवहारिक जीवन में जो जीवन की समस्याएं हैं उनमें भी दर्शन शास्त्री एक दृष्टि देता है, एक विजन देता है, और निश्चित ही इस रिफ्रेशर कोर्स में आप दर्शन की समस्याओं को, अवधारणाओं को इस बदलते हुए परिवेश में, इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
एक तो ई लर्निंग एंड ई गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा जोर चला, क्योंकि हम जो भी क्रियाकलाप, ई गवर्नेंस की तो बहुत सारे लाभ हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज द वन थिंग। अब सीधे प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को सीधे मिलता है, क्योंकि उनके बैंक खाता में पैसा जाता है। ये बीच बिछाव करने वाले लोगों की छुट्टी हो गई। तो ई गवर्नेंस और ई लर्निंग, ई लर्निंग में ये फायदा है कि हम लोग यहाँ घर में बैठे हुए किसी भी हार्वर्ड के प्रोफेसर को का भाषण सुन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि हार्वर्ड में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सैंडर्स। तो वो जस्टिस पर जब क्लास लेते हैं तो उनके क्लास में बैठने की जगह नहीं मिलती है। कोई फिलॉसफी के विद्यार्थी मात्र नहीं अटेंड करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं। और अब तो ई लर्निंग के माध्यम से हम इंडिया में बैठकर भी वो अच्छे अच्छे जो लेक्चर्स हैं उनको सुनते हैं और सुन सकते हैं। तो ये आपने ये रिफ्रेशर कोर्स आपने आयोजित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को, सारे आयोजकों को, प्रतिभागियों को और रिसोर्स पर्सन्स को, और विशेषकर विद्वान शास्त्र विद्या जी को आपने आमंत्रित किया। मैं उनके साथ 2-4 मीटिंग में हाल फिलहाल में चेयरमैन होने के बाद जरूर मिलता रहा। मैं आप सभी को नमस्कार, पांडे जी को भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही आसान, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही साधारण और आसान शब्दों में हमें दर्शन शास्त्र और भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र के महत्व के बारे में बताया, और आपने ई लर्निंग तक उसको जो है वो टच किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो हमें मार्गदर्शन यहाँ पे दिया है, आपने जो हमारे लिए जो शब्द यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, उसका हमारे जीवन में हम उसको ढालने का जो है वो प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ वी हैव विद अस प्रोफेसर Sahasrabudhe, and sir, as an academician and researcher in NERIST and IIT Guwahati, and as an administrative in the capacity of director COP, you have taken up several new initiatives for academics, curricular and co-curricular activity, entrepreneurship, research and governance. So we all are very happy that like your words and your experience will definitely benefit it to all of us. Now, my humble request you to invite you, sir, to deliver a keynote. Over to you, sir. या नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी धीरे से गुड आफ्टरनून हो गया है, 12 बजकर हम क्रॉस हो चुके हैं। चेयरमैन ऑफ ICPR डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी नमस्कार। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी डायरेक्टर HRDC जो JNU में है उस स्थित पर, डॉक्टर संजीव शर्मा जो आज ये संचालन कर रहे हैं, और रविकेश, बाकी सब फैकल्टी मेंबर्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रविकेश, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर वंदना, डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर भगत, डॉक्टर धर और बाकी सब प्राध्यापक अध्यापक मंडली जो इसमें सहभागिता कर रहे हैं, सब लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम और मुझे यहाँ बुलाने के लिए अभिवादन। और अभी मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी से सुन रहा था कि फिलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, भारतीय दर्शन शास्त्र विषय पर एक चर्चा भी होने वाली है। रिफ्रेशर कोर्स इन फिलॉसफी आज 3 भागों में से एक भाग उसका भी है, और उसके अलावा फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जो नए शिक्षक JNU के साथ जुड़े हुए उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आज इनॉग्रेशन हो रहा है। और तीसरा जो है ई लर्निंग और ई गवर्नेंस, जिसके बारे में भी डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी ने जिक्र किया कि पैंडेमिक के समय पर इसका महत्व
सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पता चल गया है, तो उसके लिए भी एक रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। ये तीनों कोर्स का जो उद्घाटन आज हो रहा है उसके लिए JNU को बधाई, JNU के HRDC सेंटर को बधाई, और ऐसे कोर्स और ज्यादा होने चाहिए ताकि हम सारे शिक्षकों तक पहुंच सकते हैं। और इस माध्यम से जब हम कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो जो आपके 40, 30, 50 लोगों की जो संख्या होती थी जिसमें हम फेस टू फेस मोड में ऐसे वर्कशॉप करते थे, अब वो जरूरत नहीं है, तो उसको थोड़ा विस्तार करना चाहिए। तो ये मेरा एक सबसे पहले ही सुझाव दे रहा हूँ कि जितने हम शिक्षकों को रीच कर सकते उतना अच्छा है। इसलिए ये 50 के बदले में कम से कम 200 लोगों को हम ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम में ले सकते हैं। तो हम तो कभी कभी एक प्रोग्राम में 1000 तक भी पहुंचे, 5000 तक भी गए थे, लेकिन उसमें टीचिंग लर्निंग ठीक नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमने फिर धीरे धीरे कम भी कर लिया। तो ज्यादा कम करते करते हमने एक न्यूट्रल पॉइंट जो होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो हमारे तरफ से 200 से 200, 250 तक एक साथ में हम कर सकते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है AICTE का। क्योंकि हमने अभी करीब 200-300 प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में किए हैं, तो उसका अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इनके बारे में भी जरूर बताऊंगा। और जो नई शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके साथ इसको कैसे जोड़ना चाहिए उसके बारे में भी कुछ शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। और हमारा ये अनुभव था कि उच्च शिक्षा में हमने कभी भी पेडागोजी बेस्ड फैकल्टी को ट्रेनिंग देने की यानी कोई चेष्टा ही नहीं की है। जब हम स्कूल या हाई स्कूल में देखते हैं कि जहाँ टीचर का रिक्रूटमेंट होता है, we necessarily require either D.Ed at the very low level and B.Ed for teaching in the high school. But when you come to colleges, universities, IITs, NITs, central universities, what do we look for? We want a PhD in that particular discipline, and that's all. तो जिसने MA PhD किया है, MTech PhD किया है, या और कोई सब्जेक्ट MCOM PhD किया है, उनको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देते हैं और मैदान में उतार देते हैं। तो मैं तो यही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैदान में उतार देते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे को ही एक बड़े क्लासरूम में जाकर आप क्लास ले लो, उसके पहले कदापि PhD के समय में उन्होंने 1-2-3 सेमिनार तो दिए होंगे जरूर, लेकिन उसमें 4-6 लोग बैठे रहते हैं, कमेटी जो होती है PhD की इवैल्यूएशन कमेटी। उसके अलावा उनको सामने बहुत सारे लोगों के सामने बात करने की भी कभी चेष्टा नहीं की होती है। बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा मौका इनको मिलता है। डिबेटिंग में गए थे, ऐसे कुछ लोग जरूर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो पढ़ाई करते रहते हैं, परीक्षा देते रहते हैं और डायरेक्टली PhD होने के बाद टीचर बन के आ जाते हैं। तो उनको जो समस्याएं होती है, और मैंने IIT सिस्टम से आया हूँ, वहां देखा है कि जो फर्स्ट ईयर के कोर्स होते हैं नॉर्मली वो 3-4 डिवीजन को इकट्ठा लेते हैं, वेयर एज हायर लेवल के जो कोर्स होते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, वो क्लास साइज 60 का होता है। लेकिन फर्स्ट ईयर के क्लासेस में जो कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग हो या वर्कशॉप हो, बेसिक फिजिक्स हो, वहाँ नॉर्मली 300-400 स्टूडेंट रहते हैं। इतने बड़े संख्या के छात्रों के सामने जाना, यानी एक तरह से प्राध्यापक के मन में एक डर रहता है। और आप देखते हैं कि आजकल के छात्रों के बीच में वहाँ उनको ऑनलाइन एजुकेशन के वजह से, मूक्स के वजह से, इंटरनेट के वजह से सारी चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में पता है, लेकिन ज्ञान के रूप में पता नहीं है। तो इसलिए जो टीचर बताने के लिए कोशिश करता है तो उनको लगता है कि ये तो मुझे पता है सब कुछ, तो ये क्या टीचर बना रहा है। तो इसलिए अपना बीच में पीछे बैठ के वो अपना मोबाइल खोल के काम करना शुरू करते हैं, कहीं व्हाट्सएप देख लिया, फेसबुक देख लिया, या कभी कुछ लोग अपना रॉकेट भेज दिया टीचर के ऊपर। आई थिंक ये जब आता है तो टीचर का कॉन्फिडेंस और भी कम होते जाता है। तो इसलिए पेडागोजी और हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक फॉर्मल प्रोग्राम होना चाहिए था, वो नहीं है। तो ये HRDC के माध्यम से कम आपने ये नए टीचर्स के लिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, ये छोटा प्रोग्राम है लेकिन कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से काफी डिटेल वाला प्रोग्राम चाहिए। तो AICTE ने ऑलरेडी एक 8 मॉड्यूल वाला प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, 2 साल हो गए।
मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, if sharing is allowed, I will just show the booklet. अभी, is it allowed for sharing? Yes, sir. Yes, sir. Screen You are the sharing. host. Yeah. हाँ? It's not visible till. नहीं, मुझे वो स्क्रीन शेयरिंग में जाना पड़ेगा. Yes, sir. यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे. It's the bottom, sir. In the bottom green button, share screen. नहीं. Anyway, ठीक है, doesn't matter. So I'll just refer to the website of AICT. All of you can look at it. This is called Comprehensive Training Policy for Technical Teachers. Although it is for technical teachers, except one module, all other 7 modules are generic. So it does not matter whether you belong to a technical domain or not. And I'm sure in JNU there are many teachers who are technical domain also. So nevertheless, for them, it is certainly going to be absolutely relevant, that module as well. So first thing is orientation to technical education and curriculum. So except the technical part of it, if you take off, I'm sure you will have what is education all about, how do you orient students, then how do you design curriculum, which is very important because curriculum has to be revised at regular intervals. It is not that एक बार हो गया तो 10 साल के बाद में रिवीजन करो. तो कम से कम हर 2-3 साल में करिकुलम को रिवीजन करना चाहिए क्योंकि दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उसको हमारे करिकुलम में लाना चाहिए, तभी छात्रों को वो रेलेवेंट लगेगा और वो भी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे. तो इसलिए एक तो करिकुलम का हो गया. दूसरा है प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स. आज आप देख रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका बार-बार जिक्र किया गया है कि वैल्यूज एंड एथिक्स आर इम्पोर्टेंट एंड देयरफॉर प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स along with ecology and sustainable development. आज हम SDG 17 गोल्स की बात करते हैं. यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स को रखे हैं, उसमें एजुकेशन भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी भी लिखा गया है. तो इसके लिए भी टीचर्स को ये सब पता होना चाहिए. जब टीचर्स को ये पता है तभी they will be in a position to really be in a position to transfer this to the students. The third module है communication skills, knowledge dissemination. जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, जो CII, NASSCOM, FICCI ऐसी जो इंडस्ट्री बॉडीज है या सरकार है और बाकी जो भी छात्रों को डिग्री होने के बाद एम्प्लॉय करते हैं, इनका मानना है कि छात्रों को कई बार उस सब्जेक्ट के बारे में, उस विषय के बारे में जानकारी तो है लेकिन वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते. तो देयरफॉर देयर मस्ट बी इम्पोर्टेंट थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स और ये कैसे स्टूडेंट्स को अदा की जा सकती है, इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल हमारे इस थर्ड मॉड्यूल में है. और इसमें जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं कि देयर आर 4 डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. मेनी टाइम्स वी ओनली रेफर टू 1 or 2 ऑफ देम. वन इज स्पीकिंग एबिलिटी. दैट इज व्हाट नॉर्मली वी थिंक, जाके 25 मिनट भाषण दे सकता है तो उसको कम्युनिकेशन करना आता है. लेकिन द अदर पार्ट इज राइटिंग स्किल्स. You have to effectively also write your thesis, you have to write your research paper, you have to write your examination answer book also. I think therefore writing skill and what is known as speaking skills. These are 2, of course, very important skills. The third skill is the reading skills. Of late, the information is continuously, exponentially growing, and therefore to know a particular subject, you may be required to read about 20 pages in just half a minute. And which is not a luxury today, but we have to do that. And especially when you graduate and get into some of the important jobs, there are voluminous reports which you are supposed to read and give your opinion. And in such areas, if 200, 300 pages are to be read in the night and then next day you have to communicate, I think your reading ability, how fast you can read and capture the essence of that is also one of the important communication skills. And last but not the least, which is not ever taught to any one of us, is the listening skills. And this is also a communication skill. It is the other way around. Here we have to receive from the other side what is being taught about or talked about. And this, it is not there in students, it is not there in faculty. And as you go up in the hierarchy, higher and higher, HODs, deans, vice chancellors, directors, and people that be in the administration, maybe chairman of AICT and even ICPR, we will take ourselves also into that role.
Many times when people come to us to tell something, even before a couple of sentences are spoken by the individual, we start saying that I know what you want to say, and start answering. I think that is the worst part. I think listening skills are also equally important. How do faculty indulge in this is also an important skill set. Then comes the instructional planning and delivery. A quality curriculum may be there, but how do you really engage in the class? Because as I said, internet is a medium through which students are already aware in terms of information, and therefore, how do you make the class interesting? How do you deliver the actual content? How do you make them realize that information is different from knowledge, knowledge is different from wisdom, and therefore, how do you translate that information which they already have into knowledge, and knowledge into wisdom, and wisdom into application of that knowledge for the society, for the well-being of the people? I think that is what is required to be done, and therefore, knowledge dissemination and communication skills along with the instructional planning is also equally important. And today we are talking about pandemic and therefore online classes, therefore technology enabled learning, whether it is in terms of PowerPoint presentation, whether it is using internet, or asking students to look at a video and come prepared in the class and then start discussion on that topic. All of this is going to be a new way of teaching learning process. And therefore, this is also significant from another area, that lifelong learning and self-learning. I think lifelong learning and self-learning are very, very vital. And I recollect Taittiriya Upanishad, in which during the Dikshanta Samaroha, when it is held, which we today called as convocations or the graduation ceremonies, there is a lecture given by the chief guest and the institution head. But in the earlier era, in the Gurukula system, when the graduates were going out of the Gurukulas, they used to tell a simple shloka, which is Satyam Vada Dharmam Chara and Swadhyayanam Pramadaha. That means you tell truth and only truth. Truth is the ultimate thing, and we must try to know the truth and also tell the truth. Dharmam Chara, here dharma is not religion, but professionalism, ethics, values, which you have to follow as a particular, whatever profession you are doing. If you are a doctor, your profession is of that of a medical science, and therefore, how do you treat the patient very good, very well? If you are a teacher, how do you profess your profession of teaching absolutely in a correct manner? If you are an administrator, how do you take care of the society and their whereabouts? If you are a politician, you have a dharma of your own. So each one has their own dharma, and how do they do it? And the last one is Swadhyayana Pramadaha, that is, the learning should go on, lifelong learning, which is a concept which has come recently from the West, and we think that everything has come from the West. Please remember, this word Swadhyayana Pramadaha was there from ancient times, thousands of years. Learning does not stop after you go out of the Gurukula. That is the starting point. You have been given a seed. बीज दिया गया है, बीज को आप हमने मिट्टी में डाला है, तो उससे पौधा बाहर आएगा. When it gets sprouted, and then it will turn out into a plant, then you will get fruits. So whole life you have to continue to study, lifelong learning. And if we tell this to our students and we ourselves do not do that, how can students learn from you? They will think that you are only telling theoretical thing, you yourself don't follow it. And therefore, all teachers have to be lifelong learners. Every day something new you have to read, either from an international journal, from an internet, from somewhere, wherever it is possible, new books which are coming. And from out of that, how do you go to the class and bring value? What you taught last year should be continuously different in the next year, next to next year. And that way, even though the general topics may be the same, how do you really engage in the classroom is going to be vital and important. And therefore, self-learning, lifelong learning is important for students as well as faculty members. And therefore, faculty members will adopt and teach students how to learn. I think learning to learn becomes a more important thing because technology is rapidly changing. Today we have some computer science, programming language, which during my time we learned what is known as BASIC, COBOL, and Fortran. Today they are not used by anyone. Today we went to C, C++, then Pascal, then came. Now today there are Java, there are many other languages which have come, and unless students are well versed with that, they will not be able to apply that in the industry. And therefore, lifelong learning is a very important thing.
Then comes the most important part is assessment of a student. I think there was a wonderful way of assessing students during the Gurukula time, and even our ancient universities of Nalanda and Takshila, which we have forgotten. And today, through Western world, with the new terminology, we are adopting the same thing, both in terms of different learning styles. I repeat, we have a lecture-based, we have a tutorial-based learning, we have experiments and laboratory-based learning, we have internship-based learning, we have project-based learning, we have experiential learning. I think these are 5-6 terminologies which are used often by the Western world, and we have adopted. Please remember, go back to the Vedas, there are 51 different styles of learning, not 1 or 2, 51. Even West doesn't know still all the 51 of them. And therefore, we have so much of knowledge, and we must adopt that. And this is also one of the parts of that evaluation system. One is learning, the second is what student has learned, how much he has learned. And therefore, moving away from the rote learning. I'm not saying that students should not have some kind of memory and then they should use it. You should not swing like a pendulum, because when we say that we are all based on rote learning methodology, all the question papers today have to be changed, and they should be all based on higher order of learning, that is in terms of real understanding of the subject, knowledge of that subject, application, analysis, synthesis, critical thinking, innovation, creativity. I think the question papers should be based on all these facets. And this is what Bloom's taxonomy talks about. This is what today's accreditation systems, the outcomes from the system of education talks about. And this has again come from the West. But please remember, this was all tested in the Gurukula individually. And please remember, every student is not the same. If you are applying the same logic, this is what we are doing mistake in terms of our entrance exams, even our exit exams. I think we have a standard question paper and we expect everyone to write the same thing. I think if he is capable of remembering from out of your notes, from your books which are prescribed for that course, and if he writes everything correctly, and he will get 85–90% marks. But if you ask a question based on that, where he is required to put in his critical thinking ability, evolve something, problem solving abilities to be tested, students have to answer differently. All answers for solving the problem need not be the same. There can be 100 different ways of solving the same problem. Maybe one of them is better than the other, that's different. But I think critical thinking ability and putting your entire brain and mind and whole of that into action and then bringing out of that is what is required in the evaluation system. Unfortunately, we were not doing it. We need to do it. West is now talking about the Bloom's taxonomy and the corresponding ways of examinations. We are also adopting that, no doubt, in terms of that, because of the nomenclatures that have come. But I think we should reflect what all exists in our own philosophy, in our own culture, in our own scientific systems, and also bring it out. The next one is about creative problem solving, which I have said. The research which we do, certainly some part of research can be original research for understanding nature, for understanding environment, for understanding the basic tenets like physics, chemistry, certainly requires in-depth analysis of that. But there are many research areas in which students do their PhD and also guide in PhD, and those theses are only meant for keeping in the almirah or in the library. There is no use of that. I think we have to do research which is socially relevant, the one which is going to be helpful for our own samaj. Samaj ke liye kya kar sakte hain? So whether it is research in humanities and social sciences, whether it is in psychology, in philosophy, as well as in engineering, science, technology, medicine, law, what is that research which will help my society? I think that is very, very important. And how do we engage teachers in understanding that? Then comes the innovation and the meaningful research and development, which is also significant and important. And last module is about institute administration. Because faculty may have joined as an assistant professor, but in his career, he will become associate professor, subsequently professor, then HOD, some of them become dean and vice chancellors, directors, and then go out in administration at higher echelons. And therefore, in the whole profession, once you come in at the age of around 27, 28 or 30, you are going to be there for the next 30, 35 years.
how and where you have to lead to, and what is that administration, a very sensitive administration. Administration has to be taking care of all the stakeholders. The most important stakeholders, students, next stakeholders, faculty members, next stakeholders, our staff, support staff, who handle various things, then the industry, then the society, the government. How do you deal with each one of them? I think that administration also should be told to them in the beginning. And this AICTE's 8-module faculty training program has been made mandatory, and unless faculty in engineering colleges, architecture, pharmacy, management institutions go through this in their first 5 years, complete the 8 modules, go to industry for one month, 4 weeks, and learn hands-on what happens in the industry. Industry here does not mean physical industry like Maruti Udyog or Tata Steel or Infosys or Tata Consultancy Services. Fine, that is also an industry. But going to a startup, going to a small and medium scale industry is also internship in that location. You can go to a village. You can study something in terms of philosophy or sociology and psychology, and understand that. Now today we have various things like Atmanirbhar Bharat. How can our villages become Atmanirbhar? I think these kind of things also can be studied by faculty members by spending 4 weeks and come back to the college or the university and start teaching. And if you incorporate 8 modules plus 1 module properly, only then you get certified and then you become regular. Otherwise, you remain contractual, you remain temporary faculty member. I think this is a big transformation which AICTE has done. And all these 8 modules are available today through the Swayam platform, which is a MOOCs platform indigenously developed by AICTE MHRD. And now the second version of that is going on, further development in Swayam by IIT Madras. So on this Swayam platform, these courses are available. They are also available parallelly in NITR. NITR Chennai, National Institute of Technical Teachers Training Research Institute, has been given this responsibility, and all modules together cost 10,000 rupees. This we want to keep a small fee. 1 module, 1,000 rupees. So 8 modules, 8,000. Then you have internship. Then you get certified. So it's a package of total spending of 10,000. Only then you will become a regular faculty. So even if you have MTech, PhD, MA, PhD, MPhil, PhD, you must do it. Is what we are propagating. New education policy talks about faculty and faculty training, and therefore this is significant. Today in the morning, before I came here, we inaugurated faculty in training program under Atal Academy, AICTE's Training and Learning Academy, under which 42 faculty development programs in all niche areas were launched simultaneously. All are 5-day programs, morning till evening, every day for 5 days, faculty are going to be trained in those areas in which the curriculum was revised by AICTE last year and last but 1 year. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, deep learning, robotics, 3D printing, blockchain, augmented reality, virtual reality, cloud computing, cyber security. All these topics, teachers themselves who came in the profession 10 years back, 20 years back, they have no taste of this. So I think we are training them for 5 days. It is like a 3-credit course indirectly. And after that, they have to develop themselves and then start engaging in the classroom. I think this is what is the power of technology, which we have used, training 20,000 faculty members in such niche areas. We have another interesting universal human values program that also was launched today morning, one of them. And more than 1,000 faculty are attending it, including vice chancellors, deans, and all that. And this one is essentially to make faculty first realize that from self, how do you move towards family, from family to your next higher up is the society, society to the nation, nation to the entire globe, the nature, the environment, and thereby make them realize that unless the universal human values, which are universal, they are irrespective of caste, creed, religion, no matter the geography, whether it is in USA or Brazil or Australia or Middle East or India, these values are same. That is what is truth, non-violence, which I said, the Satyam Vada Dharmam Chara, which I said is true for all nations. Unfortunately, many of them, they have put their blinkers on their eyes, and that's why they are not seeing this. All this knowledge and wealth has been there for all time from our ancient times.
how do we invoke it and make use of it? And that is what also the policy talks about. And that's why in the faculty induction program, if some of these are not there, please include them. If it is already there, well and good. And my appeal is, I talked about all 8 modules. Please go and register for those courses. By the way, that 1,000 rupees is for getting evaluated and getting your grade sheet, your mark sheet. Because there is some expenditure involved in faculty who are going to evaluate you, this money is kept. Those who want to only learn, for them it is all free of cost. There is nothing, no charge. In university system, maybe JNU or many other universities and colleges of arts, commerce, science, you are not made mandatory for them. Although it is not mandatory, my appeal, those who are attending, spread a word that these are fantastic programs which we have launched, and it will create great learning for all of you in those 8 modules and will create you a better faculty member as early as possible. Because our experience in terms of teachers was, many teachers, as I said, they are made to swim. Suddenly they come into the college or university and you are given a large class and you don't know how to deal with the classroom. And then some of them struggle over a period of time, say 6 months, 1 year, they understand how to go about, they will do it. Some of them cannot do it for 4 or 5 years. And I have seen even faculty members till their retirement, they never learn it. I think that is where these modules are very significant and important for training faculty to come up to that level. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब इसमें जाके रुचि लीजिए, ये मॉड्यूल को सीखिए. ये सब वीडियो बेस्ड है, आप घर में बैठ के कर सकते हैं. लर्निंग कैन बी फ्रॉम होम. It is any time learning, anywhere learning, from any platform learning. These are one of the excellent modules which are there. But also I am appealing, some of you who are experts who are going to handle this faculty induction program in your university, and you have roped in some experts, if they observe these courses which we have developed and they want to add in one of those 30-hour program of each module is 30 hours, it's like 3 credit course. If you feel that somewhere some more value can be added, it can be made still better, I think that is also welcome. I think some of you can give one lecture which we will replace by the existing one, by the new one. I think this is where collaboration starts. I think this is what we have to teach our students, that today's world is not individualistic world. We have to work in teams, and therefore that training is also required to be given. Not only human values, as I said all the time, that whatever values are there, they are universal, they are rational, they are verifiable, they lead to harmony. And harmony not only within yourself, in your body and mind and soul, but also exterior to your family members. Your behavior will change if you attend our universal human values 5-day workshops. Your attitude towards your own wife, your own sister, daughter, son, your spouse will change. Your attitude towards your superiors or people who are subordinates, that will change. Your attitude towards nation will change. Your attitude towards environment will change. Your attitude towards the global well-being will change. We have been saying that all the time in our scriptures, and these are very, very prominently said by everyone, that is Sarve Janaha Sukhino Bhavantu. This is what we have always said. We don't want to be alone happy, but we want the whole world happy. Be happy. This is not only told in verses, but it is practiced in Indian ancient civilization. We should be very proud of that. And also, we also say that knowledge may come from everywhere. We welcome it. We didn't stop any knowledge coming from anywhere. We take it, we give it also. And that is where, when we become Atmanirbhar, which the Prime Minister has been often saying about, started with Swachh Bharat to Digital India, to Make in India, to Startup India, to Skill India. I think today we are talking about Atmanirbhar Bharat because our import bills, both in oil and many other category of equipment, for example, in electronics, is staggeringly high. And if it continues like this, it would be difficult to have the balance of payment problems. And that is why we have to become Atmanirbhar. And for that, first we should develop confidence. We had done in the past. No, we should not only be happy that we had done in the past. We had done many things in mathematics. We had done many things in metallurgy and material science. We had done many things in all the
humanities and social science subjects. When we talk about the new education policy and what we are talking about multidisciplinary education, that in all universities, even if they are today pure engineering universities or the management colleges and universities, or if they are medical or law universities or general universities where arts, commerce, science is there, everyone must have access to all these domains, and that is multidisciplinary. But in the same breath, I would like to say, we have 64 kalas, 64 kalaon ki baat hamare isme hui hai. Today we talk about maximum, art, craft, design, music, dance, all of this in variety of ways was evolved in this country. Why can't we do it? And fortunately, then MHRD, today it is called Ministry of Education, that change has already been made, has implemented what is known as Indian Knowledge Systems, Bharatiya Jnana Parampara division in MHRD, that is now Ministry of Education, which is going to be seated in AICT office, and we will be blossoming that and trying to unearth all that great things which had happened in this country. Be proud of that, be inspired by that, but don't stop at that. And don't be only happy because we had done one time. By making it applicable to today's world, whether it is for Corona crisis or for social crisis, how we can make the whole world happy. Sarve janaha sakhina bhavantu. What is required is what is very, very important. Last man on the street, Antyodaya. We want to create a society where last man also is benefited. And we realize this more and more when during pandemic online classes started, students who were in large cities or students who had access to internet and the devices were able to continue their education. But look at someone in the remote tribal area of Nagaland or in Mizoram or in Arunachal Pradesh or in Jammu Kashmir. They're all handicapped because of connectivity being not as robust as it is there in Delhi or Mumbai or Pune or Hyderabad. And therefore, immediately the government has already taken up the task of, like we created roads to all the villages, then this government ensured that electricity reached all the villages. The last village in Nagaland had the electric connection reaching just about a year ago. Now internet must reach every village. Only then, and there are some devices like maybe smart mobile phones or laptops given to those who cannot afford, or create common centers. There are already CICs, central centers where in the panchayat level also there are some places where people can go and have a big TV where Swayam Prabha courses can be launched, where you can have few computers where students can use Swayam, they can use online education. And if we are able to do this, I'm sure we will be doing truly Sabka Saath, Sabka Vikas. I think that is what is most important to be done for becoming Atmanirbhar. It should start from the village level onwards till then. And all of this, unless faculty understand this, whether it is in a course of refresher course on philosophy, when you are doing all this, this philosophy of touching the last man is the most important thing. A poor man in the remotest village, I think that is what is important. And through e-learning and e-governance, I'm very happy that this year, because of pandemic, our e-governance, which was already at a very highest possible stage, has further made higher inroads into even the approval process. Earlier, there used to be 3 experts who were sent to the college or university to verify whether the facilities are there or not. And there used to be sometimes charges of corruption. I think some experts demanded something was being talked about by the college people. And the experts used to say, they don't have so and so things, and they are deliberately putting blame on us. We have not done it. So there was no way of seeing it or verifying it. Today, we are not sending any expert to any college for verification, thanks to COVID. We tried to do this for the last 2-3 years. It was not happening, and COVID made it happen. All travel restrictions were there. We have to give approvals to all the institutions within the deadline. So the best possible e-governance was, we used Microsoft Team. We created 10 users, 3 experts in different places, one in Chennai, one in Delhi, one in Chandigarh. They all, one architect, one advocate, one academic expert, they all were to visit the institution
Now the institution had 7 similar licenses to use at that 1 hour, 2 hour, 3 hour, and they were all located at different places. All of that was video recorded, including the GPS coordinates. The college cannot cheat by showing another campus and say that this is our campus and show the facilities of another campus. And we will ask to show the library, show the books, show the computer, show the library, classroom, and all of that was verified from a distance, simultaneous, and everything is recorded. Now, when the question is asked if the college has answered and shown it or not, is all recorded. So there is no hera-feri, absolutely possible at all. Absolutely transparent system has been evolved. I think that is the highest level of governance. So no institution now need to worry. If you have developed all that is required, self-disclosed, and we will verify it online, and then approvals are given directly to the institution. I think this is what is this power of technology. We have been able to use that. So refresher course, whether in philosophy or e-learning and e-governance, I'm sure you will be getting many of these inputs. And faculty induction program, many new things which are happening, interdisciplinary entry-exit system, which the policy talks about 1 year down the line with a certificate, 2 years down the line with a diploma, so that those who come into the system not knowing what exactly entails there and they realize it, उनको भी कुछ हाथ में लेके बाहर जाने की व्यवस्था जो की है उसका भी आप लोगों को इंडक्शन प्रोग्राम में बताना चाहिए, so that you will prepare your students accordingly. Then there is academic bank of credits, lot of support for research and innovation, National Research Foundation which is going to be created for funding research in not just science, technology, but humanities and social sciences, and so on and so forth. I think I can go on and on. I saw the time is almost coming to an end, and I will conclude. And I would always like, if there are any questions, if some of the faculty members who are attending all these 3 programs have a query, I'm willing to answer them, any query of their choice. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much, sir. So if there is question, we can take 1 or 2 questions. You can watch it on people can write it on. Yeah. So there is no question in the chat box. Yeah. Yeah. If it is not, that's fine. But Okay. if someone who is attending live, if they They want can to raise ask, they can raise their hand and ask the question, please. Technical Yeah. team, please unmute if someone I can. think Andruti Shah wants to ask. Shailendra also wants to ask. So these 2 people at least can ask. Huh? Could you please unmute yourself? Yeah. Yeah. Am I audible, sir? Yeah, absolutely, absolutely. Thank you, sir, for giving us such a kind of a proper kind of a knowledge and explaining all the 8 points which you have explained in a very brief manner. I just have a slight confusion. You mentioned about the assessment of the student, and one more question, that is creative problem solving. Are those 2 things same? One and the same? They are having a lot of overlap. See, when you want to assess a student, there are 2 things. Assessment, as I said, in terms of Bloom's taxonomy, starts from memory-based questions. You know, you many times our question papers write from, unfortunately, KG to PG. In many seminars, I say that KG to PG. From your KG, the teacher there in the nursery and KG will ask A for apple, B for ball. I think if A for something else says, no, that is how we start off. And then up to the PG education, MA, MSc, also the questions are of that type. So repetitive. So we said maximum 30% questions can be based on memory. Remaining 70% questions should be on the other aspect. Whether he has understood that basic foundation or fundamental concept about that subject. That is few questions. Then few questions on giving some data and asking you to analyze the data. Because in life we do all of that, but in colleges we never do that. And therefore, when he goes into the society, he is, to learn on his own. Whereas if a student is prepared like that, tested like that, his, employability or becoming an entrepreneur becomes so successful that you will see the India's, the whole, what you say,
demographic dividend which we talk about will be truly achieved only when we do that. And then there are other aspects like critical thinking. So you give a question where the student has to think and write. And these answers need not be same for all students. See, this is another problem. Our whole university education is such that we want shortcut. So if the model answer is there, they will look at it. If he has written 10 out of 10, 8 or 9 marks, otherwise 0 marks. If he has put in his own words something which is slightly different, I think our teachers don't even read it actually. So I think this change is required in teachers, and through our modules, we try to bring it in. And then for students, when you asked about innovation and then problem solving ability, we see lots of problems. There are a million problems in our country. Our country is one which has huge number of problems because of huge population. So that is a strength as well as a weakness. But we have that many number of hands, 100-fold hands, 1 million problems, but we have 1.34 billion people. So I think why can't we solve 100 people together cannot solve one problem. I think, but that attitude has to be developed from the school education till the higher education. And that is what I'm talking about, problem solving. Our hackathons are a great success. Some of the interesting things, whether it is for blind people, creating something where they will be supported, for handicapped people, something who can be supported, for Divyangas, for women empowerment. There are all kind of, cases which we read in the newspaper, and it's a very sad story. Women, when they go in the late evening, sometimes someone is teasing them too, even including up to the rape cases happen. So how we can protect those girl children? Actually, these are the kind of applications students were able to develop, and they are into the market. I think that is what is problem solving. See what is there in the society. What is that is a problem for a agricultural farm, who is there in the village. How do we increase his income? One is the different types of crops. How do you add value to that crop so that you convert that whatever outcome has come into a further refined one where he can sell it in the market at a higher cost. So I think various things are possible. So if you are keeping your 5 senses, God has given us 5 senses: eyes, ears, or sense of smell. And this, do we use it? How effectively do we use it? I think if you start talking this in the classroom, if first teachers understand this, then they can speak this language in the classroom. And then students will also change the way they are doing it. And I'm sure we will create a new India, a different India. The whole world will come here for learning like they were coming here earlier for Nalanda and Takshila. And all of that is possible. And who can do it? Teachers can do it. And that passion has to be developed in the teachers. I think that is what is important. Okay, thank you. Thank you, so sir. much. Now I would request Dr. Mrityunjay. You can ask the question, then after that we can take one question from chat box. Over to you, Dr. Mrityunjay. Yes, sir. Actually, I had a question to Chairman AICTE, sir. Is there any initiative from AICTE side to assess the e-government implementation in the universities or technical education? मृत्युंजय जी, e-evaluation जो है already स्वयं प्लेटफॉर्म में हम ऑलरेडी कर रहे हैं. उसमें ऑनलाइन अलग अलग तरीके से इवेल्युएशन चल रहा है. लेकिन हाउ इफेक्टिव इज दिस टेस्टिंग ना, ये अभी इस कोविड पैंडेमिक के वजह से इसका प्रमाण बढ़ा है, तो थोड़े थोड़े स्टडी चल रहे हैं. आज हमारे हाथ में उसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये कर रहे हैं क्योंकि मैंने 1-2 कॉलेजेस ने किया ऑनलाइन एजुकेशन में, किसको कितना प्रॉब्लम आया. मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि रिमोट एरिया में आपके यूनिवर्सिटी में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बैंडविड्थ है, मे बी 1 गीगाबिट कनेक्टिविटी है, लेकिन आपका छात्र जो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद जहां गया था, वो अपने गांव में गया था, वहां यदि इंटरनेट नहीं है तो उसको कहां से वो मिलेगा. तो शहरों में जहां इंटरनेट है उसको तो वो लेक्चर सुनने के लिए मिला, देखने के लिए मिला. यही चीज सरकार के ध्यान में लाने के बाद अभी प्रायोरिटी में अगले 3-4 महीने में हर छोटे छोटे बस्ती तक इंटरनेट पहुंचाने का काम सरकार को करने के लिए विनती किया है. उन्होंने इसको हाथ में लिया हुआ है. जैसे मैंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस, लाइक दैट इंटरनेट टू एवरी हैमलेट,
Yes, sir. Yes, sir. This is regarding this online teaching part, but this other aspect is also there. Whether the e-governance will help the institution greatly. It will help. See, e-governance में जो ट्रांसपेरेंसी आती है, जो मैंने अभी हमारा अप्रूवल प्रोसेस के बारे में बताया, अब वो सच क्या था हमको पता नहीं था. अब पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ, हर साल एक 10 कंप्लेंट आती है कि ये जो एक्सपर्ट आए थे इन्होंने ठीक तरह से देखा नहीं. हमने तो उनको लाइब्रेरी दिखाई थी लेकिन उन्होंने देखा नहीं और लाइब्रेरी नहीं है करके लिख दिया है. अब ये कौन सा सच है, ये यहाँ बैठ के दिल्ली में तो हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी ई गवर्नेंस के माध्यम से उनको ऑनलाइन में लाइब्रेरी दिखाओ बोलने से उन्होंने दिखाया था क्या नहीं दिखाया था. देखिए अभी आप मुझे दिख रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूँ, वैसे ही आपके पीछे क्या है मैं देख रहा हूँ, कैलेंडर दिख रहा है, अलमीरा दिख रहा है. वैसे ही हम उस कॉलेज में लाइब्रेरी दिखाओ बोलने से वो लाइब्रेरी दिखाया है या नहीं दिखाया है ये तो रिकॉर्ड हो जाएगा. आप भी ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हो, ये JNU के लोग. तो मेरे ख्याल से ऐसा ट्रांसपेरेंसी बनाने में बहुत ही ई गवर्नेंस काम में आता है. और जहां जहां जिस राज्यों में हमारे लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर माध्यम से वहां लैंड की हेरा फेरी बंद हो गई. अदरवाइज किसी और के नाम से लैंड लेना और ये गड़बड़ करना, ये जब देश में चल रहा था, ये करप्शन बहुत कम हो रहा है. तो मेरे ख्याल से ई गवर्नेंस विल इंश्योर दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो करप्शन. द राइट पीपल विल गेट. सी देखिए सिंपल चीज, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यूजिंग आधार कार्ड बेसिस जो चालू हो गया, तो मिडलमैन गायब हो गए. जो जिसको सब्सिडी देनी चाहिए, स्कॉलरशिप जिसको मिलनी चाहिए, डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा जाना लगा, तो ऑलरेडी करप्शन कम हो गया, जीरो हो गया. तो ऐसे ई गवर्नेंस में एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करने में मदद होती है. इसलिए हमको ई गवर्नेंस में जाना चाहिए. Thank you, sir. We are taking the last question from chat box, and I'm reading the question from chat box posted by Sonam Lama. Sir, where can we get trained for ML, DL, AR? Was it from Atal? Yes. Right now, every day we are continuing the programs and they will run for 5 days. Today itself, as I said, 42 new programs were launched. Please keep looking at AICT website, and there is a competition now because we receive more than about 1,500 applications for each course, and we are restricting to about 200-250. And after 200-250, we close for that particular session. But these are continuously going on. If you do not get chance this time, you will next time or the next time, you will certainly get the chance. And we are getting candidates from all over the country, nooks and corners. And we will train as many teachers as possible in this 1 year. Our target is to train 1 lakh teachers during this 1 year. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much for your thought-provoking words and enlightening all of us, for your inspiring, encouraging, and your like the motivation to all of us. What I learned from your lecture, sir, that this learning is the lifelong process and the self-learning process, but we need to know that how to learn to learn. So that is very, very important. And another thing which is very, very important, then what are the basic skill make our teaching very interesting, informative, and how to make more interest among the student. That is very, very beneficial to all of us. Thank you very much, sir. And you also enlightened us that what are our role and responsibility for the society, because how then academicians or the scientists, they can play an important role to among that the society where they are the living. So some of the programs of Government of India is very interesting, like the Unnat Bharat Abhiyan and all our program. So we need to collaborate, we need to incorporate like the local community in all our research or all our project, so that they can also feel the ownership in that project also. They cannot feel that whatever we are implementing as administration or as an academician or research. So they need to be realize the ownership in our all research or project and other. So thank you very much, sir. Now we are just come to the end of this memorable combined inaugural session for our 3 program.
Before I present a vote of thanks, I have some few announcements for the participant. Dear participant, after this inaugural session, your separate classes will be like the held. And after session, like the 2 o'clock, your coordinator will be interact to you that they will tell you what is the structure of your course, what is the mode of evaluation and all. So you maybe you have get the password and ID for that particular meeting. So you may just interact with your coordinator. So whatever you have some problem or whatever you have some query related to the course, you can directly contact with the course coordinator, and you can contact with our HRDC also for any technical help and other help. So thank you very much all the participants. And now you know that officially you are now the member for during the course period of HRDC JNU, and we heartily welcome you. And you are also representing our institution also. So आपके ऊपर 2 responsibility है. एक तो यह है कि you are representing our institute, so that how you maintain the discipline and the decorum of the class. So sometimes it may feel that this is the online course, so कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ODM में हूँ या नहीं हूँ. And the another one is because now you are also representing the JNU also. So we need to maintain the quality of HRDC JNU. And second thing is that we need to maintain the prestige of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. So you both have the 2 responsibility, and I welcome you all as officially member for during course of the course period. So in this bird, now this is my sincere responsibility to propose a vote of thanks. And the first of all, we express our deep sense of gratitude to our Vice Chancellor, Professor M. Jagdish Kumar. So we had such an eminent administrative and a man with a vision and mission as our Vice Chancellor. So whatever we are doing, this is only due to his like the motivation, the encouragement, and his continuous support to conduct such kind of the program online. So thank you very much, sir, for your support, encouragement, and motivation to conduct such program successfully. We were indeed privileged to be had Professor Sinha. Thank you very much, sir, for delivering the inspiration lecture. And we highly thankful to you. And I believe that we all get benefited by your words, sir. We were honored to have listened to your insightful speech. And on behalf of all connected through virtual conference room here, our heartfelt thank to you, sir. And thank you very much for motivating, inspiring, and encouraging all of us. Our heartfelt gratitude to Professor Sahasrabudhe sir for delivering the keynote address here. So you are a man of distinct vision and fountainhead of illuminating idea and idol of knowledge and experience and a source of inspiration to all of us. Thank you very much, sir. I would also thank to all the coordinators. I can say Professor Santosh Kumar Sukla sir, Professor Oina Bhatt sir, then Professor Ravi Kes, Dr. Sheetal Sharma, Professor Pawan Kumar Dhar, and Dr. Bandana. So like we have 3 courses, so 6 coordinator we have. Thank you very much for arranging, structuring the course structure, developing course structure, arranging highly experienced resource person. It's a very difficult task that preparing the concept note, then preparing the abstract also, then communicate with the participant. Thank you all the coordinators. I would like to thank my director HRDC Professor Brajesh Pandey. एक तरह से सबको एकदम स्वतंत्रता देके रखते हैं कि हमारा गोल यह है कि आपको you try to do the best. कैसे करना है वो आप करिए, लेकिन जो हमारा गोल है वो पूरा होना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. तो पूरे सूत्रधार आप ही हैं इस सब कार्यक्रम के. Thank you very much. So I would like to thank the special thanks to our HRDC team. You know that this is all virtual, and from the last we are conducting so many courses, and so many courses are also coming. So ये दिन रात पूरा काम करते रहते हैं. They are just replying all your mail. They are sending the message. So my special thanks go to the technical team, especially Mr. Gaurav, Mrs. Neha, then Mrs. Soha, Om Prakash ji, Amar. So there is a huge team is behind this. Thank you very much. And my special thanks goes to participant, your HOD, because without your HOD, you may not be here. Because your NOC is required, the relieving order is required. So my thanks is also going to all the HOD, the head of the institution. So thank you very much. If I forget any name, so thanks to all. And with the word,
I would, with the kind permission of all esteemed guests and my director, we are leaving this meeting now, and we will resume in the next session, 2 o'clock in separate session. Thank you very much, and over to you, technical team. Yes, sir.